अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से सम्मानीय सदन के सम्मुख बड़ी विनम्रता के साथ भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते हिंदुस्तान की आजादी के 75वें सभी ऑनरेबल मेंबर प्लीज उपलक्ष्य में अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूं कि हमारे देश में अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी आप जी अभी तो इंट्रोड्यूस ही होना है ना, कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं जी। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties, केवल मूव करिए, आप केवल मूव कीजिए, ओनली मूव करिए। मैं कर रही हूँ, क्या मूव कर रही हूँ, थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूँ। Relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act 1872, जी, Parsi Marriage Act and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law Sharia Application Act 1937, Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Foreign Marriage Act 1967, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से सो आई राइज टू मूव। अभी पहले इंट्रोडक्शन के बाद सर, आई राइज टुडे to introduce the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021. This is the second or third time consecutively they aggressively bring in bills and nobody from the opposition is consulted. Whatever is discussed in the Business Advisory Committee is never implemented on the floor of the House. So I first want to condemn this new practice this government is doing. They want the bill needs to be scrutinized, all stakeholders should be consulted, and then I think we must unanimously pass any reforms. If they are got to do with women, I think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed more discussions to the standing committee. This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying them right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir.